Assalamu alaikum. So in this video we will solve question number 3 of exercise 12b. So we have to construct a rhombus. So two measurements are given, AB length and ABC angle. So first of all, AB we will draw length AB. We will draw length AB. So here we draw another line to write construction steps. So here we write construction okay. So now first of all we will draw AB equal 6 centimeter. A B which is equal 6 centimeter. Now we have to construct angle B. So B पर जो angle है वो है 115 डिग्री. B पर जो angle है वो है हमारे पास 115 डिग्री. B पर now we will construct 115 degree angle at B. So इससे पहले हम construction steps भी लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल ये हमने ड्रॉ कर लिया. ओके, नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्ट 115 degree angle at B. B पर हम 116 डिग्री एंगल जो है उसको कॉन्स्ट्रक्ट करें, उस 115 डिग्री एंगल जो है कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे. So starting from here 0 to this is 115 degree line. Okay, now we'll join point B with this line or point. Now this angle is 115 degree. So as we know that all the measurements in a rhombus are ऑफ सेम लेंथ. मतलब जो रोम्बस में जितनी भी जो पॉइंट्स होते हैं या जितनी भी लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं. मतलब ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर. नाउ हम कंपास को ओपन करेंगे टू द लेंथ 6 सेंटीमीटर. कंपास को ओपन करेंगे टू द लेंथ 6 सेंटीमीटर. सो 6 सेंटीमीटर तक हमने कंपास को ओपन किया, बी पॉइंट पर रखा कंपास को और एक आर्क ड्रॉ कर दी. सो इधर हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में भी लिखेंगे ये ड्रॉ an arc of arc of radius 6 centimeter with center at B. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सिमिलरली ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर with A as center. So these three steps we have done, and this is fourth step. So now we will draw so this is an arc we have drawn. Okay, so in next step this is point C. This is point C.
draw draw an arc of radius 6 centimeter, radius 6 centimeter, radius 6 centimeter, with C as center. This arc will cut another arc. So next step is join A, D and C. So now we will place compass at point C and draw an arc. This is point D. Now we will join A, C and D. A, C और D को आपस में join करेंगे हम. Similarly, join C with D. हम D को भी C से join करेंगे. Okay. So this is our given rhombus. Okay. So we have to find an angle measure and write. Sorry, we have to find and measure. We have to measure and write down the length of diagonal. Measure A C. ए सी को हम मेजर करेंगे तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हम इधर लिख लेंगे. उसके बाद हमने बी डी को मेजर करना है. मेजर बी डी, मेजर बी डी. सो ये है बी डी हमारे पास. सो मैंने अब मेजर करेंगे स्केल से. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए सी को मेजर करेंगे. सो दिस is almost 10.1 centimeter. So AC equal 10.1 centimeter. Similarly, we will measure B3. We will measure B and D. So BD is almost 6.4. Yes, 6.4 centimeter. So BD equal 6.4 centimeter. Okay, and exact answer is 6.5 centimeter. So almost ये जो है हम दोबारा चेक कर लेते हैं. So 4 और 5 के दरमियान में है. सो ये ऑलमोस्ट हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर. मार्कर से ड्रा कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है. ठीक है. सो डोंट वरी. सो दिस इज़ आवर गिवन रेक्टेंगल. सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.